Hello everyone, hope you're doing well. Namaskar. So therefore, the topic of today's discussion is the linkage between world history and the modern Indian history. और फोकस बेसिकली रहेगा जो हमारा सिलेबस है यूपीएससी का। तो अगर हम 1700s से स्टार्ट करें तो उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप 1750s का है। तो दिस येलो पार्ट इट इज ऑस्ट्रिया, राइट? तो देयर वाज दिस ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन फ्रॉम 1740 टू 1748। And in this war, France wanted that its puppet should become the ruler of ऑस्ट्रिया। मतलब फ्रांस चाहता था कि उसका जो एक पपेट कह लो, उसका एक नुमाइंदा कह लो, वो जो है ऑस्ट्रिया का रूलर बने। और अगर ऐसा हो जाता देन फ्रांस वुड हैव डोमिनेटेड द significant part of Europe because this Austria, यहाँ पे तो हंगरी लिखा है, but this Austrian Empire was pretty big. And as a result, Britain and France they fought all across the world. और इसका जो इंडिया में मैनिफेस्टेशन था, वो मैनिफेस्टेशन हुआ in the form of the first Carnatic War. So first Carnatic War took place from 1746 to 1748. So Carnatic, it is here. You see, this is Carnatic, and the first Carnatic War, 1746 to 1748, took place, and it was a manifestation of the Austrian War of Succession that took place from 1740 to 1748, right? And the second event that comes into operation is the Seven-Year Global War, which took place from the year 1756 to 1763. Again, this was a product of Britain-France rivalry. Britain और फ्रांस आपस में लड़े, पूरी दुनिया में लड़े, यूरोप में लड़े, अफ्रीका में लड़े, अमेरिका में लड़े, भारत में भी लड़े। एंड विंस्टन चर्चिल ने तो यहाँ बताया दैट इट वाज द रियल फर्स्ट वर्ल्ड, राइट? और यहाँ पे जो 7-year war हुआ, उसका मैनिफेस्टेशन इंडिया में था द थर्ड कार्नेटिक वॉर, and the years are the same, that is 1756 to 1763. And in the third Carnatic War, the very decisive battle, it was Battle of Wandiwa 1760. And after this war, the domination of the French was ended in India, right? And now the Britishers, they dominated the international trade of India, right? अगला जो event हमारे पास आता है, that comes out to be establishment of United States of America. American War of Independence, and that is from 1776 to 1783. And the consequent establishment of United States of America was a big blow to the Britishers. And after this, the Britishers, they feared for their possessions in India. And वो डर किससे था? वो डर इंडियन से नहीं था, वो डर था अपनी ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में भी ये सेटलर्स ही थे, दीज वर द ब्रिटिश सेटलर्स हु हैड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, सो दे हैव स्टार्टेड लिविंग हियर। इन्होंने अमेरिका को इन 13 कॉलोनीज को अपना घर बना लिया है, और उसके बाद इन्होंने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज रूलिंग इंडिया, it had operations in India since the year 1600s, and empire building 1757 से बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुई। तो बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1783 द ब्रिटिशर्स दे वर रूलिंग बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक वर्चस्व बना लिया था इंडिया में, और ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि जिस प्रकार से जो अमेरिका में सेटलर्स थे उन्होंने अपनी आजादी डिक्लेयर करी, उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी शुड नॉट बी एबल टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। और एंड अकॉर्डिंगली दे ब्रॉट दिस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। In the Pitt India Act of 1784, the British Parliament took proper control of the East India Company's operations in India. They established a board of control, and some other features were also present. Cornwallis, who was leading the British Army in the America, he was sent as Governor General of Bengal in the year 1786, and he started a policy of what he called as aloof elite. And as per this policy of aloof elite, Cornwallis, he did not want the Britishers, that is the East India Company officials, to intermingle with the Indians. He established a regime of racism. His regime was very authoritarian. He did not want to share any power with the Indians. He did not want Indians in any senior position, right? And plus, he also forbade East India Company officials from marrying Indians. तो इस प्रकार से कॉर्नवालिस ने ये इंश्योर करने की कोशिश करी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया में सेटलर्स का दर्जा ना पा सके, वो यहाँ पे सेटल ना हो जाए। नेक्स्ट इवेंट जो हमारे पास आता है दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789. So after the French Revolution of 1789, that is from 1792 to 1815, France was fighting against all the other European countries. And during these long wars, there was a rise of Napoleon. And Napoleon, he expanded the French Empire and literally covered most of Europe. Around the time period of 1798, he had also attacked Egypt. And that created huge amount of fear in the hearts of the Britishers regarding the territorial security of India, right? और ये fear खैर उन्होंने handle भी कर लिया because there was a naval defeat which was meted out to Napoleon's navy in and around Egypt by the British Navy. तो उसके बाद खैर कोई खास खतरा नहीं था, but इस situation का फायदा उठाया वेलेस्ले ने। तो रिचर्ड वेलेस्ले, he was the Governor General of Bengal from the year 1798 to 1805, और इसको ओवरहाइप करते हुए वेलेस्ले कन्विंस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि इस एम्पायर बिल्डिंग को दोबारा शुरुआत किया जाए। और इसका डायरेक्ट जो कॉन्सिक्वेंस था इट वाज इन द फॉर्म ऑफ द फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर 1798-99, which resulted in annexation of significant territories of Mysore and the consequent एक subsidy lines भी साइन किया था मैसूर के साथ वोडेयर डायनेस्टी को वापस लेके आके। और दूसरा जो लड़ाई हुआ दैट वाज द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805। तो वेलेस्ले ने ये दो मेजर लड़ाई लड़ी, बहुत सारी इंडियन स्टेट्स के साथ सबसिडी लाइंस भी उसने साइन करी और एक ब्रिटिश एम्पायर को एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके आके उसने खड़ा किया, ठीक है।
Right. So that was the impact of rise of Napoleon. After this, we can talk about the Crimean War. Yeah. So Crimea, it is here, right? So this is Crimea. It used to be part of what you call as the Ottoman Empire. Right? This is a map of 1750s. So around the time period of 1853 to 56, there was this Crimean War. This war was fought in Crimea. And who were the fighters? On one side, there was Russia. And on another side, there was Ottoman Empire. Russia चाहता था कि वो Ottoman Empire की जो territories हैं, उनको capture करे, right? And well, that would have disturbed the balance of power. रशिया एक इतनी बड़ी ताकत बन जाता जो कल को शायद से बाकी यूरोपियन पावर्स को थ्रेटन करता, कल को शायद से ब्रिटेन को भी थ्रेटन करता. ठीक है. And because of this particular thing, the Britishers, the French, they came together and they assisted Ottoman Empire and they defeated Russia. Right? तो हम एक ये कह सकते हैं कि क्रीमियन वॉर एक प्रूफ था that Russia is becoming expansionist. और सिर्फ यूरोप में ही नहीं, भारत में भी उसका असर पड़ा. Because India, Afghanistan, Russia. Right? So therefore there was a fear that Russia can enter India via Afghanistan. And therefore now the Russians, they became very, very concerned with respect to the buffer between India and Russia, that is Afghanistan. And accordingly, फिर वॉर्स भी इससे पहले फर्स्ट अफगान वॉर हो चुकी थी 1838 से 40 अगर मेरा ईयर करेक्ट है तो. फिर बाद में क्या कहते हैं 1878 से 82nd अफगान वॉर हुई जिसमें लिप्टन ने क्या कहते हैं जिसका लिप्टन अफगान एडवेंचर कहा जाता था. तो ये एक इम्पैक्ट है कि जो रशिया ने अपना एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड दिखाया उसका इंडिया के ऊपर क्या असर हुआ. इंडिया के ऊपर ये असर हुआ कि इंडिया ने क्या कहते हैं अफगान वॉर्स लड़ी, वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ा and automatically burden on the taxpayers will also increase. तो अब जरा आ जाते हैं 20th century में. So 1904, 1905, there was this Russo-Japanese war. So in this Russo-Japanese war, so here we have Japan, here we have Russia. Japan and Asian countries surprised the whole world, right? And it surprised the whole world by defeating a European power that is Russia. तब एक मान्य था कि एक रेसिज्म था कि यूरोपियंस को कोई हरा नहीं सकता. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे? If Japanese, who are Asians, if they can defeat Russians militarily, then Britishers, they can also be defeated by Indians. And therefore, this boosted the morale. And इसी के बाद एक immediate movement start होती है जिसको कहते हैं स्वदेशी movement, which began in the year 1905. But इन दोनों events के बीच में एक और event है, and that is Russian Revolution of 1905. Russian Revolution 1905, it was an attempt by the Russians to establish democracy and to overthrow Tsar. They failed to establish democracy and they failed to overthrow Tsar. However, Tsar, he was forced to bring a parliament. वो parliament के पास कोई real powers थी नहीं. That is a separate matter. Duma कहा जाता है उस parliament को. But इस Russian Revolution 1905 में वर्कर्स ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई. और इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट में जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने सोचा कि हमें भी वर्कर्स को इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनाना चाहिए. एंड इन स्वदेशी मूवमेंट 1905 1911 जिसपे 1908 तक एक मास मूवमेंट वाला एक कोशिश थी, एक फेज चला था, उसमें वर्कर्स की काफी अच्छी पार्टिसिपेशन थी. राइट. सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन एंड योर रूसो जापानीज वॉर. एक तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है रूसो जापानीज वॉर में, जापानीज विक्ट्री से, और दूसरा कहीं ना कहीं वर्कर्स की पार्टिसिपेशन करानी चाहिए. इस प्रकार की जो एक सोच है वो डेवलप हो रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट. उसके बाद आता है ब्रिटेन रशिया एग्रीमेंट 1907. राइट. तो इन द ब्रिटेन रशिया एग्रीमेंट 1907 रशिया ने माना कि इंडिया, तिब्बत, अफगानिस्तान और साउथ ईरान, दे आर बेसिकली दी स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स. एंड फाइनली जो ब्रिटिशर्स का एक फियर था रिगार्डिंग रशियंस इन्वेडिंग इंडिया वाया अफगानिस्तान एंड टेकिंग अवे इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वो एक फियर कहीं ना कहीं खत्म. राइट. तो वो एक टेंशंस विद रिगार्डिंग रशिया और इंडिया में खत्म हुई ऑफ द ब्रिटिश सरकार. राइट. नेक्स्ट जो इवेंट आता है दैट इज बेसिकली एग्रेशन अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर. राइट. सो लेट अस गो बैक टू द मैप. Right. So this is like the Ottoman Empire, today's Turkey. Right. यहाँ पे नीचे टिक नहीं रहा है, but North Africa में Egypt, for example, it was part of Ottoman Empire. And in 1911, Italy, अभी तो टूटा हुआ दिख रहा है, unification of Italy नहीं हुई है अभी तक. In 1911, Italy took over Egypt, and the Britishers, they did not come to aid of Ottoman Empire, and this basically hurt the sentiments of Indian Muslims. Right. यहाँ क्यों sentiments hurt होंगे? उसका reason ये है that Ottoman Empire was ruled by Khalifa, and Khalifa was also the religious head of the Muslim world. तो कहीं ना कहीं खलीफा का स्टेटस डाउन हो रहा है, खलीफा का टेरिटोरी लॉस हो रहा है, एंड द ब्रिटिशर्स आर नॉट हेल्पिंग, एंड देयरफॉर दैट इज द ग्रीवेंस. नेक्स्ट वाज बाल्कन वॉर. सो फर्स्ट बाल्कन वॉर इट टुक प्लेस इन द ईयर 1912 where these small Balkan powers, that is your Montenegro, Serbia, Greece, Bulgaria, right? So Montenegro, Serbia, Greece, Bulgaria, they attacked Ottoman Empire's territory in the Balkan Peninsula. This is the Balkan Peninsula, and they took over all this territory, and as a result, your Ottoman Empire further shrank. Right? And Ottoman Empire is headed by Khalifa. Again, the Britishers, they are not assisting Khalifa, they are not helping the Ottoman Empire, and therefore the sentiments of the Indian Muslims, they are getting hurt. Why? Because Ottoman Empire is being ruled by Khalifa, who is the religious head of the Muslim world. Right? So, therefore, kahin na kahin, ek Muslim League becomes kind of anti-British, and this will play into the 1916 Lucknow Pact. इनफैक्ट उससे पहले 1912 में मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज सेल्फ गवर्नमेंट. 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ जहां पे आईएनसी और मुस्लिम लीग की दोस्ती हुई. उसके बाद 1920 से 1924 खिलाफत मूवमेंट,
एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 1922, जहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दी एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत. The next event that takes place is World War One from 1914 to 1919, right? And in this World War One, many events are taking place. One of the events is, for example, the Russian Revolution 1917, right? And that is Russia. It became communist in the year 1917, and after that, Lenin came to power in Russia. And the ideology of communism, it believes in internationalism. That is, it believes in defeat of capitalism all across the world. It wants to unite all the workers of the world against the capitalist forces. And therefore, as a result, the Communist Party of India was first formed in 1920 in Tashkent under the Roy. और उसके बाद दोबारा 1925 में also it was formed in India. Right? So therefore, this is how एक तरीके से इंडिया में कम्युनिज्म बढ़ रहा है. इंडिया में सोशलिज्म का आइडियोलॉजी प्लस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी भी अब आगे बढ़ रही है. So that is the impact of this particular Russian revolution on the Indian domestic politics, and the Britishers, they are fearing that communism should not succeed in India, right? So therefore, that is it. And it's associated, for example, Meerut conspiracy case 1929. उससे पहले पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिनके खिलाफ भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था सीएलए में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन द ईयर 1929. राइट? सो देयरफॉर इस प्रकार से जो है थ्रू द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड द ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वर्कर्स की आजादी को कम किया जाए, कम्युनिज्म को कंट्रोल लेके आया जाए. मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस थी, उसके अंदर भी काफी सारे जो कम्युनिस्ट हैं उनको अरेस्ट किया गया था. तो ये एक हम देखते हैं कि ये एक इम्पैक्ट आ रहा है रशियन रेवोल्यूशन का इंडियन नेशनल मूवमेंट में. Right, participation of workers will increase. Right, workers, they will become very enthusiastic that first communist country of the world, first communist state of the world has been established. So therefore, working class movement को बहुत ज़्यादा positive जो है एक boost मिलेगा because of the Russian Revolution of 1917. एक और event जो हुआ 1920 में under the guidance of Lala Lajpat Rai and also assistance of Bal Gangadhar Tilak, All India Trade Union Congress was formed. राइट, सो आप देखें कि ना ही बस कम्युनिस्ट पार्टी बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो भी एक वर्किंग क्लास को और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. गया सेशन 1922 ऑफ आईएनसी, उसमें आईएनसी ने डिसाइड किया कि अब जो आईएनसी है वो सारे वर्कर्स के मुद्दे उठाएगा. सारे वर्कर्स के मुद्दे माने कि पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उन वर्कर्स के मुद्दे नहीं उठाती थी जो कि इंडियन फैक्ट्री ओनर्स के अंडर काम करते थे, बिकॉज दैट वुड हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन कैपिटलिस्ट. वो सिर्फ उन वर्कर्स को सपोर्ट किया करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द मॉडरेट्स, that those workers who were working in the British owned factories, right? So but अब 1922 में गया सेशन में सीआर दास के अंडर ये डिसाइड किया गया that INC should take up the issue of all the workers. और क्यों? कारण था कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो वर्किंग क्लास और पेजेंट क्लास अपनी खुद की क्लास मूवमेंट स्टार्ट कर देंगी जो कि इंडियन यूनिटी को हर्ट कर सकती है. सो देयरफॉर एक तरीके से आईएनसी का पूरा हाव भाव चेंज हो गया और इट्स परसेप्शन चेंज टुवर्ड्स द वर्कर्स बाय बिकॉज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917. Another component of the World War One was कि World War One ये जो Allied powers लड़ रहे थे, they were fighting on the theme of self-determination. There was a narrative, there was a propaganda that on one side there are democracies and on another side there are absolute monarchies. And the Allied powers, that is democracies led by Britain, they are fighting for self-determination. So therefore क्योंकि narrative ये था, तो एक प्रेशर, एक ऑटोमेटिक एक प्रेशर ये भी था that what about democracy in the colonies? And therefore accordingly Montagu Chelmsford reforms in the form of Government of India Act of 1919, they also came. इससे पहले मोंटागू स्टेटमेंट आई 1917 में, राइट? सो देयरफॉर दैट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट. सो एक पूरा द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इट इज चेंजिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. Another component which is related to World War One is the Ghadar movement. So World War One, it was considered as an opportunity by revolutionaries that the Britishers, they are right now weak because they are fighting on the external front. So therefore, Ghadarites or the Indian NRIs, they came from US and Canada into India with the hope of repeating the 1857 revolt beginning in Punjab. Bengal revolutionaries, they also assisted. And however, this particular movement it failed. Another component, Bal Gangadhar Tilak, he was released from jail in 1914. तो बाल गंगाधर तिलक जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अभी काफी डाउन है, राइट? तो बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को रिवाइव किया थ्रू दी होम रूल लीग मूवमेंट फ्रॉम 1916 टू 1980. तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस हम कह सकते हैं, राइट? कॉन्सिक्वेंस कैसे हुआ? पर कॉन्सिक्वेंस इस प्रकार से हुआ कि होम रूल लीग मूवमेंट में सिर्फ एजुकेटिव प्रोपेगेंडा था, पैसिव रेजिस्टेंस की शुरुआत नहीं करी गई थी. जब करने की कोशिश करी तब एनी बेसेंट ने दगा दे दिया. वो एक सेपरेट मुद्दा है. तो वो एक एजुकेटिव प्रोपेगेंडा था, और एजुकेटिव प्रोपेगेंडा होने का रीजन क्या था? वो रीजन ये था दैट ब्रिटिशर्स दे वर आर्म्ड विद इमरजेंसी पावर्स एंड बाल गंगाधर तिलक थॉट that if I have to revive the Indian national movement, then I don't have to be, then I should not behave very anti-British on the outside, right? So therefore, why? Because the Britishers, they can then very easily crush the movement, right? So that is why the method of the Home Rule League movement was impacted by the international event that is the World War One. तो ऐसा हम कह सकते हैं. उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है दैट इज रिगार्डिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. सो दैट इज अनदर मेजर इवेंट. व्हाट वाज द इम्पैक्ट? द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 वाज कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 में जो आपका कैपिटलिज्म था
वो vast हो गया, वर्ल्ड ओवर vast हो गया, जिसकी वजह से प्रेस्टीज ऑफ कैपिटलिज्म इट केम डाउन सिग्निफिकेंटली एंड ऑटोमेटिकली एनिमी ऑफ कैपिटलिज्म इज कम्युनिज्म, सो प्रेस्टीज ऑफ कम्युनिज्म इट grew and therefore popularity of communism all across the world it increased, right? India may be increased karegi, so therefore we can say that the working class movement it kind of like got a boost, at least in terms of number of participants. It got a boost because of the Great Depression of 1929. गांधी जी ने भी रियलाइज करा कि लोगों में बहुत आक्रोश है, वॉर इन्फ्लेशन था, राइट, बिजनेस डाउन था, सो देयरफॉर महात्मा गांधी ने भी अपनी जो नेक्स्ट मूवमेंट टाइम करी इट वाज बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम 1930 टू 1934। पहले भी महात्मा गांधी कहीं ना कहीं आक्रोश इस्तेमाल कर रहे हैं जलियांवाला बाग massacre of 1919 and the आक्रोश which was there because of the war inflation and Spanish flu, जैसे अपना कोरोना वायरस है स्पेनिश फ्लू का वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, तो गांधी जी उस आक्रोश का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं 1920 से 1922। दोबारा 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ और महात्मा गांधी 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं, राइट? सो कैन यू सी द कोरिलेशन which is there? So that is the impact which is there of the world events. Next event that comes into operation is the World War II from 1939 to 1945, right? And because of this World War II, the Britishers, they are becoming economically very, very weak. And therefore, there is a sense of realization that they might not be having economic capacity to suppress the Indian national movement anymore. B, during the World War II, there was rise of Azad Hind Fauj or INA, and its primary leader was Netaji Subhash Chandra Bose. And नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो कर दिखाया जो अभी तक रेवोल्यूशनरीज कोशिश कर रहे थे बट 1857 के बाद रिपीट नहीं कर पाए थे, एंड दैट इज डिसअफेक्शन इन द आर्मी। और एक बार ब्रिटिशर्स को ये एहसास हुआ दैट इंडियन आर्मी और द इंडियन आर्म फोर्सेस दैट इज इंक्लूडिंग द एयर फोर्स, नेवी एंड टेरिटोरियल आर्मी, दे आर नो मोर 100% लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। They realized that it might not be a very great idea to continue ruling India because the next revolt can overthrow them, because the next revolt can overthrow them violently, right? So this was the impact. फिर उसके बाद आईएनए के जो पीओडब्ल्यूज थे उनको इंडिया लेके आया गया और आम जनता खुद ब खुद उठी, पहले भी उठी थी। फॉर एग्जाम्पल क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, उसे कैसे भूल सकते हैं? And this INA agitation 1945, there was all India participation. That is, all sections of the society, all political parties, everyone participated in the INA agitations. And therefore, we can say that what stalwart leaders like Mahatma Gandhi and others, they were trying to do, and they had achieved significantly also, that process was completed by Netaji Subhash Chandra Bose. And ultimately, in 1947, we were able to achieve independence. So therefore, this is the linkage between the events of world history and the events which are taking place in India. Right? So, ये सब चीजें क्या है एक प्रकार से चल रही हैं, right? Also, we can look at the ideological impact. Take ideologically अगर देखा जाए, so Indian national movement was inspired by the ideas of enlightenment, right? Enlightenment ideas, that is the modern polity ideas, self-rule, no taxation without representation. The Enlightenment movement was from 17th century till middle of 18th century, and so Enlightenment movement was there from 17th century, 18th century. After that, we can say that the ideas of capitalism, for example, the moderates, they were capitalists. Many of the extremists, they were also capitalists, right? So therefore, ideology of capitalism also inspired the INM leaders, and that was a preferred model for long period of the INM leaders for development of India. Then, with the rise of socialism and communism in the 1920s, we see rise of leaders like Netaji Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, and others who were inspired by the ideas of socialism. Right? Communist Party, of course, established in 1925 in India, is inspired by the ideology of communism. Right? And then fascism, till the point of time, it did not show its negative face. So therefore, the extreme nationalism component was also inspiring, many sections of the society. Right. So therefore, that is the linkage between the world history and the modern Indian history. Thank you for your time. God bless you. Take care. Bye bye. Thank you for your time. God bless you.